Yes, hello all, welcome to the class. And yes, in the class today we are going to discuss nutrition in plants. हम लोग आज nutrition in plants पढ़ने वाले हैं. So let us start students. Plant nutrition की बात यदि हम करते हैं तो हमने देखा है कि mostly the plants they are taking which type of nutrition? They show autotrophic mode of nutrition, isn't it? We have already seen this thing. What is heterotrophic mode of nutrition, what is autotrophic mode of nutrition. So plant shows autotrophic mode of nutrition. That means they can prepare their own food, है ना, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. So how the plants prepare their own food? What is this process called as? Yes, students, the process of making the food, yes, by the plants, it is called as photosynthesis. Yes, the process is called as what? It is called as the photosynthesis. So we are going to discuss this process of photosynthesis, and I hope you will enjoy all the parts there, है ना. So प्लांट्स को अपनी जो नीड्स है, न्यूट्रिएंट्स की नीड्स है, फुलफिल करने के लिए वो जो प्रोसेस यूज करता है जिससे वो खाना बनाएगा उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स की नीड्स क्या है? प्लांट्स की नीड है एनर्जी रिक्वायरमेंट. यस, दे नीड्स द एनर्जी एज वेल एज दे नीड कार्बन एज अ सोर्स. Got it, students? तो ये दोनों चीजें the both are satisfied by both. It is obtained by the process of photosynthesis. So now what is photosynthesis? क्या है ये photosynthesis? Photo means what is photo? Yes, you all know photo. बोला तो photo यानी क्या होता है? Photo हम सभी को पता है, that means light. Can we say that? Isn't it? Photo or photon is the light particles, I can say. Yes, so photo means light, and synthesis करना यानी build करना. That means I can say that. What do you mean by synthesis? Synthesis means to build. Yes, that is to build. That means if we want to build something by the light, we say that that process is what? It is photosynthesis. Light की help से कुछ बनाना, that is a photosynthesis. और plant क्या बनाते हैं? Plant food बनाते हैं अपने लिए. Yes, in a form of we see carbohydrates, isn't it? चलो. So what is this photosynthesis, students? It is a complex process by which green plants prepare their own food. Yes, how they are preparing their food? They are preparing their food by synthesis of organic compounds like carbohydrates. Yes, they will synthesize these compounds, carbohydrate. From whom? They will synthesize such compounds from simple inorganic molecules. Yes, मैंने आपको पहले बताया था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. मैं राइट? तो प्लांट्स किसको यूज कर रहा है एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है. यस, दे आर यूजिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. They are taking the light energy in a form of sunlight. Yes, and they are taking a help of one more pigment, that is chlorophyll. क्लोरोफिल की हेल्प लेता है और ये सारी चीज से वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट. यस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट ओनली, isn't it? So again I will say, यदि आपको कोई definition बोलता है, so you can give the definition as photosynthesis. It is a complex process by which what happens, the green plants prepare their own food by the synthesis of organic compounds like carbohydrates from simple inorganic compounds or molecules like carbon dioxide and water by using sunlight and in presence of chlorophyll. Chlorophyll कहाँ present होता है? Chlorophyll we know that it is present, or we get the chlorophyll from the leaves, isn't it? It is present in a leaf. Got it, students? That's why the photosynthesis also takes place. कहाँ होता है photosynthesis? ऊपर से हम बोलेंगे तो वो लीफ में होता है ना. इन द लीफ डेफिनेटली देर आर द मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स में आपके पास क्या रहेगा? थाइलाकॉइड रहेगा क्लोरोप्लास्ट में. यस, और वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट है, isn't it? So all these things you will get to know one by one, and in all that parts, ये सारे parts बेटा आपके
शॉर्ट करके हम लोगों ने अलग अलग वीडियोस भी बनाए, सो दैट यू कैन वॉच द डिफरेंट वीडियोस, स्मॉल वीडियोस, and you can get the detailed information about everything, isn't it? Yeah, come on. So students, now we know that the carbohydrates, जो carbohydrate बन रहा है, that means जो glucose बनेगा, उसमें से जितना प्लांट्स को रिक्वायर रहेगा, इट विल यूटिलाइज टू गेट द एनर्जी, गॉट इट। और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जो प्लांट्स को अभी नहीं चाहिए, वो स्टोर करके रखेगा। यस, दैट विल बी स्टोर्ड। सो दैट कार्बोहाइड्रेट, इट इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? It is stored in a form of starch. Yes, that carbohydrate, it is stored in a form of starch. So starch serves as an internal energy reserve for the plants. If there is a question which is an energy reserve for the plants, आपका आंसर आना चाहिए starch. Got it? Do you know, students, what is an energy reserve there in humans? Starch, we know that it is an energy reserve. Yes. In plants, what about humans? हमारे में जैसे हम ग्लूकोज हम लोग भी लेते हैं, yes, as an energy source, but if it is not required, so glucose is stored in which form? Which is an energy reserve there? Anyone? If you don't know, you can note it down. It is glycogen. What is it? It is glycogen. Got it, students? So glycogen is energy reserve in case of human. Yes. In human beings. Got it, students? Yes. So now, if I'm coming back to the starch, this starch is used by the plants whenever there is a demand for energy. So this starch can be converted into again glucose, and in that way, it is used. Yes, and yes, plants do not use as a directly glucose को as a glucose भी use नहीं करता है. Glucose को वो convert करता है sucrose में. Yes, glucose is converted into sucrose and then it is used by the plants. Remember this thing also. So what you have to remember? जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में फूड बन रहा है, प्लांट्स बना रहा है, तो जो ग्लूकोज बनेगा वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है सुक्रोज में और बाद में यूज्ड अप होता है प्लांट से. यस, और जो पार्ट ऑफ ग्लूकोज का यूज्ड नहीं होना, यस, विच इज एक्स्ट्रा, गॉट इट, वो स्टोर हो रहा है. वो कौन से फॉर्म में स्टोर हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में. I hope this is clear. So now what is the equation for photosynthesis? Photosynthesis का equation क्या होगा? What I told you, first of all, carbon dioxide. Yes, so I will write it down. 6 molecules of carbon dioxide. Yes, and 12 molecules of water are taken. Yes, so carbon dioxide plus water, I told you किसके presence में? In presence of sunlight. Yes, and chlorophyll. Got it? What you will get? क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा C6H12O6. What is it? It is a carbohydrate. और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये है ग्लूकोज. Got it? Or 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen as a gas. It is also released. So this is what? This is carbon dioxide. Yes, ये है water. Yes, ये आपका हमको पता है oxygen which is liberated. Yes, or which is released there. This is also, sorry, this is water. यस, तो ये इक्वेशन आपको सभी को अच्छे से लर्न करके रखना. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. 6CO2 plus 12H2, it gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. यदि आप बैलेंस करोगे इक्वेशन, तो इक्वेशन बैलेंस प्रॉपरली होता है. नाउ यू नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन. यस, वी हैव लर्न ऑल दिस थिंग इन केमिस्ट्री, हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन. यू कैन सी हियर, ये 6 कार्बन है यहाँ पे. Yes, so यहाँ पे ये carbon 6 आ गया. Then what is, how much oxygen will be there in this case? 6 and this 2. 6 2s are 12 oxygen molecules are here. Am I right? And here also I will see 12 water molecules will be 12 हो गया. Am I right? तो oxygen कहाँ कितने हो गए? You can see here 6 oxygen is here. 6 oxygen is here. तो 12 तो हो गए. और जो वाटर मॉलिक्यूल के 12 थे, 6 2s are 12. So that is also balanced.
Carbon is also balanced. What about now hydrogen? How much hydrogen are there? 12. 2s are 24. So here it is 12 students. Yes. And this how much is 6? 2s are 12. 12 plus 12 it is 24. So now this equation is properly balanced. Got it? So this is an equation of photosynthesis. Now coming to the next part, that means which are the essential elements of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में essential elements कौन से? सबसे पहला हमने देखा सनलाइट और क्लोरोफिल. आप बोलोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी तो essential है. But students, listen carefully. If carbon dioxide and water are there, yes, but if sunlight is not there, then the photosynthesis will not take place. If chlorophyll is not there, again photosynthesis will not take place. Definitely, if carbon dioxide is not there, photosynthesis will not take place. But the essential elements, yes, other than the organic and inorganic compounds and molecules, if we say, they are the sunlight and chlorophyll. Yes, यदि क्वेश्चन आता है कि essential elements, definitely आपका sunlight and chlorophyll, this two should be the first thing to remember. Yes, so you can see here, this is the carbon dioxide, students, which is taken from the atmosphere. उसके बाद में वाटर भी लिया जाता है बाहर से, सॉइल से वाटर लिया, कुछ मिनरल्स भी लिए जाते हैं लाइक नाइट्रोजन, isn't it? And we are in presence of sunlight and with the help of chlorophyll. Chlorophyll जो लीफ में मिलता है, लीफ में कहाँ मिलता है? लीफ में क्लोरोप्लास्ट में मिलती है. Yes, so with all these things, what you get? You will obtain sugar. That means a carbohydrate. And oxygen is also liberated, which is given out. Oxygen gas बाहर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है. Got it, students? Yes. So if we will discuss about the sunlight and chlorophyll, we know that why the sunlight is necessary, why it is needed. Sunlight का काम क्या है? Now to make this process, फोटोसिंथेसिस को करना है हमको, प्लांट को करना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी. So from where this energy, it will be getting, the plants get the energy from the energy of the sunlight. Yes, so plants use the energy from the sunlight. Yes, they will take that energy of sun. Yes, and they split the water molecules. किसमें स्प्लिट करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे. किसमें? हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में. H2O को ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H प्लस एज वेल एज ऑक्सीजन. यस, तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करेगा. अब ये जो हाइड्रोजन आयन है, दिस हाइड्रोजन आयंस हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करेगा? हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? हाइड्रोजन आयन आया आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से. और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट किसने किया? वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट सनलाइट की एनर्जी ने किया. गॉट इट? तो इसीलिए एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज नेसेसरी. Yes, so now these plants can absorb light under 400 to 700 nanometer. इतनी wavelength की light plant absorb कर सकता है. इसके बीच की 400 से 700 nanometers wavelength की light plants absorb कर सकते हैं. Got it, students? Yes. Now maximum photosynthesis जो होगी, यहाँ इसके बीच की lights तो absorb करता है plant, लेकिन maximum photosynthesis, yes, maximum photosynthesis कब होती है? At what light? Yes, it occurs in red region, students. याद रखो. Yes, आपका जो spectrum है, so maximum photosynthesis takes place at red region. Yes, and minimum in green region. ये सबसे कम होगा आपका ग्रीन पार्ट में, ग्रीन रीजन में. अब यदि आप ये पूरा स्पेक्ट्रम देखोगे, यू नो दैट हाउ द ultraviolet ray, UV ray, IR ray, visible range is all there. Yes, so between 400 to 700 nanometer, the maximum or the light absorption can be there, and in that also
in a red region, yes, there will be a maximum photosynthesis and minimum in a green one. Got it, students? Now this was the role of sunlight. Sunlight का काम ये है. Yes, अब क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है, यस, जो लीफ में मिलेगा, उसका काम है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करना. यस, सनलाइट का जो ये लाइट है, सनलाइट की जो एनर्जी है, इसको ट्रैप कौन कर रहा है? उसको ट्रैप करने का काम आपका क्लोरोफिल करेगा. सो इट इज यूज्ड टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी फॉर द प्लांट्स. या क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं. क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट आपको मेसोफिल सेल में मिलेगा. मेसोफिल सेल कहाँ है? मेसोफिल सेल लीव्स में होते हैं. Yeah, that's why we can say that the chlorophyll is present in a leaf. Yeah, more specifically कोई पूछेगा तो you have to give the answer that it is present in a chloroplast. Yes, the structure of chloroplast and all, we will discuss that in detail also. Okay, so this chlorophyll, again, it plays a very important role in absorption of light, and they are the primary electron donor also. या जब लाइट एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डोनेट होते जाते हैं एक के बाद एक. देयर आर सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. दिस ऑल थिंग्स when we'll see the phases of photosynthesis, light and dark, है ना, उस समय में मैं आपको बताऊंगी in detail that this electrons it is again donated, it is by this chlorophyll. So this is a primary electron donor also. I hope this is clear. So we have seen the role of sunlight as well as chlorophyll. Sunlight और chlorophyll दोनों का importance हमने देखा. अब समझ में आ गया है कि chlorophyll का importance क्या है, sunlight क्यों जरूरी है. Why I am saying that this both are the essential elements of photosynthesis. Because sunlight नहीं रहेगी, सबसे पहले क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाओगे, है ना. अब यदि सनलाइट की एनर्जी ट्रैप हो जाती है तो उसका काम क्या है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने के बाद में जो हाइड्रोजन आयन बनेगा, वो हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके शुगर में या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. यस, जिससे आपका प्लांट्स एनर्जी ले सकता है. So this is what we can say, that these are the essential elements of the photosynthesis. Got it? Now if I move for little bit more about chlorophyll, यदि हम chlorophyll के बारे में और थोड़ा देखेंगे, so I'll just give you one more thing here. We can write it down here, students, that the chlorophyll, there are different types of chlorophyll. Before moving ahead, we will just write it down. Different types of chlorophylls are there. Yes, like chlorophyll A, yes, chlorophyll B, chlorophyll C, D, E, as well as bacteriophil. Bacteriophil जो है वो आपका बैक्टीरियाज में मिलेगा. Got it? Bacteriophil A, in that way also it is there. Got it? So इसमें से जो chlorophyll A और B है, yes, chlorophyll A and B, they are the most commonly occurring pigments. Most commonly occurring. Clear? Chlorophyll, students, actually there is one more point you should remember. जो chlorophyll होता है ना, it is important to note it down. Just you can note that it is very highly sensitive. Chlorophyll बहुत ज़्यादा sensitive होता है किसको? लाइट को. बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी तो वो sensitive है. तो chlorophyll is highly sensitive to light. अब वो लाइट पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, यस, सो दैट कैन डिस्ट्रॉय दिस क्लोरोफिल आल्सो, है ना, वो डैमेज कर सकता है. सो आई कैन से दैट सॉरी, टू मच ऑफ लाइट can destroy it.
Yes, it can destroy the chlorophyll. I hope this is clear. As well as जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो एब्जॉर्ब होती है सनलाइट वो 400 से 700 की रेंज में होगी, है ना। तो जो क्लोरोफिल है वो दोनों ब्लू और रेड लाइट दोनों एब्जॉर्ब करता है, और वो रिफ्लेक्ट कौन सी लाइट करेगा, ग्रीन लाइट। इसीलिए तो हमको वो ग्रीन कलर का दिखता है ना। So you can note it down one more thing, that chlorophyll can absorb both blue and red light and reflect green light. Got it? और इसीलिए हमको जो कलर है क्लोरोफिल का कौन सा है, ग्रीन कलर, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। Got it, students? Yes. So what I was saying that other than the chlorophyll, जैसे chlorophyll ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं। I'll just give you the names of them, students. Like if it is a carotene, yes, carotene कौन से कलर का कलर देता है, it is also present in the leaf, it imparts some color to the leaf, तो carotene देगा आपको orange color, carrots, है ना, in that way you can remember. Orange color. Then one more is there that is called a xanthophyll. Xanthophyll, it imparts yellow color. ये लीफ को येलो कलर देगा, यदि ये पिगमेंट रहेगा तो लीफ आपकी येलो कलर की दिखेगी। वी हैव सीन ना, सिर्फ हमेशा हर प्लांट्स के लिए ग्रीन कलर की नहीं होती है, कभी क्या येलो कलर हो जाता है, कभी आपको ऑरेंज कलर भी दिखता है, isn't it? So उस समय में ये वाला पिगमेंट ज्यादा रहता है। Then one more is there, you can write phycobilin, एक नाम है phycobilin. It gives the relief, red color, violet color, in that way. Got it? So orange color हमको जैसे पता है कि कैरेट्स का कलर ऑरेंज है, तो कैरेट्स में कौन सा पिगमेंट मिलेगा, द कैरेट्स इज हैविंग कैरोटीन देयर, isn't it? If I talk about maize yellow color, yes, so it is imparting yellow color. Then red color, violet color, you can find this phycobilin, it could be there in different types of algae. जो एल्गेज होते हैं ना, ब्लू एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, सो उन सब में आपको फाइकोबिलिन मिल जाएगा. दिस पिगमेंट इज फाउंड देयर. ओके, blue green is there, then brown is there. Yeah, so these are some other pigments other than the chlorophyll. Chlorophyll के अलावा ये ऐसे कुछ pigments है जिसके बारे में you should know also. Got it? So now this was how the chlorophyll is also important, how the sunlight is also important. After that we will just discuss that which are the raw materials for photosynthesis. Photosynthesis के लिए raw materials कौन कौन से हैं? तो दो रॉ मटेरियल्स हम याद रखेंगे, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर इज वाटर, है ना, क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों को हम, वो दोनों रॉ मटेरियल है, कच्चे मटेरियल जो हम ले रहे हैं और जिससे हम क्या बना रहे हैं, जिससे हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं. गॉट इट? तो द कार्बन डाइऑक्साइड, स्टूडेंट्स, कहाँ से लेगा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड? डेफिनेटली एटमॉस्फेयर से लेगा, isn't it? So carbon dioxide is obtained by the terrestrial plants through the small openings on the surface of a leaf called as stomata. एटमॉस्फेयर से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट किसके थ्रू लेगा? स्टोमेटा रहता है. जैसे दिस इज अ लीफ, स्टूडेंट्स, वी नो दैट द लीफ के सरफेस पे, अंडर सरफेस के नीचे की साइड में कुछ छोटे छोटे पोर्स रहते हैं. Yes, there are small openings, not on the upper side, but on the lower side of the leaves. Got it? Upper में भी रहेगा, but mostly it is always there in a lower side, which are called as, ये छोटे pores को हम बोलते हैं stomata.
Yes, these are the tiny pores or या opening जिसके थ्रू gaseous अंदर बाहर होती है plants के. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, जो ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि द ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, है ना. तो जो ऑक्सीजन है उसमें से कुछ ऑक्सीजन, रिमेम्बर याद रखो स्टूडेंट्स, द ऑक्सीजन गैस दैट इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, वो सारी ऑक्सीजन बाहर नहीं आएगी. और उसमें से कुछ ऑक्सीजन प्लांट यूज करता है फॉर रेस्पिरेशन, या वो रेस्पायर भी करेगा ना प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन को तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन लगेगी, तो वो ऑक्सीजन वही वाली ऑक्सीजन यूज करता है जो फोटोसिंथेसिस में बनती है. Yes, and so remaining oxygen is there. So most of the that it is not used. That is all given out. वो सारी ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर दे देता है एटमॉस्फेयर में. So it will move out through the stomata. और एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा वो भी अंदर आएगा किसके थ्रू? It will come in through this stomata only. Got it, students? So now this stomata, that's why we can say that it helps in the gaseous exchange as well as transpiration. One more important thing, students, stomata के बारे में there is a complete class, एक पूरा class मैंने किया है for stomata, where we will I have explained you the structure of stomata. हमने stomata का structure देखा है, stomata का function देखा है, स्टोमेटा किस तरह से ओपन और क्लोज होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, है ना. जब स्टोमेटा खुलता है तब गैसेस अंदर बाहर करेगी, जब बंद होगा तो गैसेस अंदर बाहर नहीं करेगी. ये सारा किस तरह से होता है, उसकी कुछ थियरीज है. यस, सो ये सारी चीजें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटास है, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन अ डिफरेंट लेक्चर. Yeah, you can find the link of that class in the description box. मैं description box में उसकी link आपको दे दूंगी, so you can watch that class. Yes, and you can get everything in detail about the stomata. Clear? So just take it from there. I'll add the link in the description box. Now, apart from this, I can say that means apart from stomata, gaseous exchange कहाँ से होता है? It can be also done through the surface of stems, roots, etc. लेकिन most, yes, maximum gaseous exchange कहाँ से होगा? स्टोमेटा. बट स्टोमेटा के अलावा भी स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, क्योंकि वहां पर भी आपको वो रहेगा. yes, some part will be there, not only in the leaves, but yes, you can find it in the stems and roots also. समझ में आया? अब देयर कैन बी अ क्वेश्चन आपके दिमाग में कि मैम यदि एक्वाटिक प्लांट रहा, ये तो हो गया टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी जो लैंड में रहते हैं प्लांट्स, है ना. बट जो पानी में झाड़ रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे? या सो दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड इन अ डिसॉल्व्ड फॉर्म. वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा लेंगे? जो कि वाटर में डिसॉल्व हो गया रहता है, उसको वो लोग लेते हैं. यस, और कैसे लेंगे? थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस. यस, उनके बॉडी सरफेस से, प्लांट अपने बॉडी सरफेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, विच इज प्रेजेंट इन अ डिसॉल्व फॉर्म. और इसीलिए जो प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स है, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड, देखो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मिलता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स को वो पानी में से, पानी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में उसी को लेना पड़ेगा, है ना. दैट्स व्हाई दे हैव टू डू मोर फोटोसिंथेसिस as compared to the terrestrial plant. This is also a very important point to remember. I hope आप लोग कुछ important points जो मैं आपको बता रही हूँ, you are writing in your copy. Yes, please note it down all these things. Definitely आपको यहाँ पर मिल रहा है सारा, but just आपके पास लिख लो ये सारी चीजें. Got it, बेटा? Now, this was about carbon dioxide. Now the next raw material, it is water. वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि वाटर को ही तो स्प्लिट करेगा सनलाइट की एनर्जी, और उसका जो हाइड्रोजन आयन बनेगा वही तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट में. एम आई राइट? है ना. सो वाटर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल. सो दिस वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट्स. कहाँ से मिलेगा वाटर? वाटर रूट से एब्सॉर्ब करेगी सॉइल में से, है ना. कैसे एब्सॉर्ब करेगी? बाय द ऑस्मोसिस.
Osmosis, we know that there is a movement of water from a lower concentration or higher concentration. कहाँ से कहाँ जाएगा? From a higher concentration to a lower concentration. Got it? तो soil में water का concentration ज़्यादा रहेगा, roots में कम रहेगा, तो soil से water roots में absorb होगा, उसी तरह से roots से वो plants के upper parts में जाके absorb होगा, और इस तरह से वो transport होता है. और कौन करता है वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट एक स्पेशल टिश्यू है प्लांट में जिसको हम बोलते हैं जाइलम. So water transport is done by the xylem. Got it, students? Yeah. So xylem पानी को वाटर को कहाँ लेके जाएगा? वो मेसोफिल सेल तक लेके जाएगा, लीफ पे, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी. और xylem it transport the plants and different all the parts of the plant also. Got it, students? So water को सारी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ साथ में वो लीफ के पास भी लेके जाएगा, बिकॉज मेसोफिल सेल्स में कहाँ क्या हो रहा है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है. I hope this is clear. So these are the two raw materials for the photosynthesis. Now, कहाँ पर होता है photosynthesis? What is the site of photosynthesis? It is chloroplast. Now, where is this chloroplast? Again and again, I am from the starting मैं आपको बता रही हूँ. I don't know whether you understood it or not, or you are getting confusion that where is the chloroplast. Don't worry, we will discuss that. तो chloroplast जो है वो है main site of photosynthesis in higher plants. Yes, main site है जहाँ पर photosynthesis होता है. ये plant का एक organelle है students. Yes, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक सेल, या फिर हम इसको मेसोफिल सेल भी बोलते हैं. प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल रहता है उसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. ये देखो आप, यू कैन सी दिस स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ये लीफ का हमने अंदर से देख रहे हैं कि लीफ का ये ऊपर का पार्ट है, क्यूटिकल है. दिस इज एन एपिडर्मल लेयर. उसके बाद में आप ये जो देख रहे हो ना, दिस सेल, यू कैन सी ऑल दिस सेल्स. ये जो सारे सेल्स हैं ये है आपके मेसोफिल सेल्स. ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स, these all are the मेसोफिल सेल. यहाँ पे दो अलग टाइप के मेसोफिल सेल है. इसको हम बोलते हैं पैलिसेड, ये वाले सेल को हम बोलते हैं पैलिसेड, और ये वाले सेल को हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल. तो जो पैलिसेड मेसोफिल सेल है स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, दिस इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड करके मेम्ब्रेन होता है, वहां पर आपको क्लोरोफिल मिलेगा. और यही क्लोरोप्लास्ट में, यस, उसके अलग अलग पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ क्लोरोप्लास्ट. Yes, so that is a main site of photosynthesis. I hope this is clear. Yeah, so you can write it down like this, that what happens, this is a leaf. Yes, in the leaf there are the mesophyll cell. Then in the mesophyll cell there is a palisade layer of mesophyll cell. In a palisade layer of mesophyll cell there is a chloroplast. Yes, and inside the chloroplast there is, you can make a thylakoid, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोफिल. एंड दिस क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द ग्रीन पिगमेंट, isn't it? So ये क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? ये पूरे पार्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है. Yes, again an important part. There is again a different video for chloroplast. मैंने क्लोरोप्लास्ट के लिए एक अलग से छोटा वीडियो बना के रखा है, जहां पर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे. यस, और यू विल सी दैट हाउ द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन अ थाइलाकॉइड. व्हाट इज थाइलाकॉइड, और ये सारी चीजें आपको वो वीडियो में मिल जाएंगी. देखो आप, ये स्ट्रक्चर आप शॉर्ट में यहाँ देख सकते हो कि दो मेम्ब्रेन है. नाउ देयर इज स्ट्रोमा, दैट इज ग्रैनम, देयर इज अ थाइलाकॉइड. एंड स्टूडेंट्स, ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा. ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. या, so that chloroplast structures video, you can also watch it
I will also share the link of that in the description box में मैं उसकी link भी डाल दूंगी, so that you can also see that class and you can get a complete information about the chloroplast also. Got it, students? So chloroplast, we can say that कितने chloroplast होता है? Yes, you know, there can be students, or there may be, you can write it down, more than 5 lakhs of chloroplast. Yes, more than 5 lakh chloroplast per square millimeter of a leaf. लीफ सरफेस का पर स्क्वायर मिलीमीटर सरफेस के लीफ पे नियरली 5 lakhs क्लोरोप्लास्ट होते हैं. यू कैन इमेजिन हाउ मच more chloroplasts are there. They are large in number, isn't it? So now this is what is your chloroplast. Got it? अब chloroplast के अलावा भी, this is just an extra information I wanted to tell you. That is a part of a plastid only. Yes. So chloroplast के अलावा there are also students leucoplast and chromoplast. Yes, other than chloroplast. So leucoplast का काम क्या है? leucoplast है वो white colored का रहता है. जैसे chloroplast हमने, yes, so this is a white colored. That means they are lacking any colored pigment. There is no colored pigment is there. It lacks any colored pigment. कोई भी कलर्ड पिगमेंट इसमें नहीं मिलेगा. ल्यूकोप्लास्ट में वो व्हाइट कलर के होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जनरली आपको मिलेगा एरियल पार्ट्स में. जो ऊपर के पार्ट्स रहते हैं ना प्लांट्स के, एरियल प्लांट्स में यू कैन फाइंड द क्रोमोप्लास्ट आर देयर. They have this chromoplast is having the pigments other than green pigments. Yes, it have pigments other than green. यानी ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के दूसरे जो भी पिगमेंट्स है आपको कहाँ मिलेंगे? क्रोमोप्लास्ट में. जैसे मैंने आपको बताया कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इन दैट वे. आई होप दिस इज क्लियर. और ये ल्यूकोप्लास्ट आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ये एरियल पार्ट्स में मिलेगा. दिस ल्यूकोप्लास्ट कैन यू कैन गेट इट in underground parts. Okay, underground parts of the plants. और ये पिगमेंट्स तो नहीं है इसमें, कोई भी कलर का पिगमेंट नहीं है, तो प्लांट में क्या यूज करेगा? यस, यदि पिगमेंट नहीं है उसमें तो प्लांट में वो यूज होता है टू स्टोर द प्रोटीन्स, ऑयल, स्टार्च. ये स्टोरेज पर्पस में यूज होगा. यस, सो इट हेल्प्स इन स्टोरेज. रिमेंबर, हेल्प्स इन स्टोरेज. What I am saying, it is a leucoplast because उसके पास कोई पिगमेंट, कलर्ड पिगमेंट नहीं है, तो उसका काम रहेगा स्टोरेज में हेल्प करना. Yeah, so this is a little bit extra information. These are the other than the chloroplast. Got it, students? Now, so this was about the photosynthesis that we have seen. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? What is photosynthesis? We have seen the equation of photosynthesis. We have seen the important elements or the essential elements of photosynthesis. हमने उसके बारे में पढ़ा. सनलाइट एज वेल एज क्या था? क्लोरोफिल. इसके बाद हमने देखा रॉ मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. देन वी हैव सीन व्हिच इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दैट इज chloroplast, isn't it? Also, I told you that you have to watch the video for the chloroplast as well as stomata. I'll give you the link for that video in the description box. Now, at last, we will see now how the mechanism takes place. फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म कैसा होगा? यस, किस तरह से पूरा फोटोसिंथेसिस होता है अब तो हमको पता है एक्चुअली, बट कैसे होगा? सो इन शॉर्ट आई जस्ट एक्सप्लेन यू. इफ यू वांट आप लोग लिख सकते हो. I am not writing anything. There is no in the slide. I'll just write some points there. Okay. So first of all, we know that the carbon dioxide. So this carbon dioxide is taken from where? It is taken from atmosphere. Atmosphere से carbon dioxide को लिया जाएगा.
यस, किसके थ्रू लिया जाता है? एटमॉस्फेयर से. इट इज टेकन थ्रू द स्टोमेटा. एम आई राइट? स्टोमेटा के थ्रू लिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. या यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देखा जाएगा क्योंकि डिफ्यूजन बोला है, सिमिलर टू द ऑस्मोसिस ऑल्सो. उसके बाद में वाटर आया. वाटर भी है, कहाँ से लिया जाएगा? वाटर इज एब्सॉर्ब्ड. इट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल. Yes, and it is by roots, and it is taken to the leaf through xylem. It is transported. It reaches where? It reaches the leaves. Am I right? Now chlorophyll, the third thing, chlorophyll is present in leaf. Yes, leaf specifically we can write now chloroplast. अब हम chloroplast लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है ना, isn't it? Yes, now this chlorophyll, it will help to trap the, what it will do? It will help to trap the sunlight. Yes, and it will take the energy of the sunlight. Got it? So now because of the chlorophyll, the sunlight or the light energy converted to chemical energy. लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया गया? केमिकल एनर्जी. एंड इट इज डन बाय दिस क्लोरोफिल. गॉट इट? अब ये एनर्जी क्या करेंगी? दिस एनर्जी हेल्प्स टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल. एम आई राइट? ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में काम आएगी. तो हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर. Now because of the photolysis, the hydrogen ion, yes, the hydrogen ion जो produced होता है, it is obtained from this. Yes, it is used to reduce what? Carbon dioxide to carbohydrate. Am I right? है ना? और साथ साथ में जो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन दिस, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एज अ बाय प्रोडक्ट. है ना? Product. Yes, it can be used in respiration by plants. Plants का respiration में use हो सकता है. और released in air. ठीक है? In this way now the food that is in a form of carbohydrate, it is produced by the plants. Yes, by the process of photosynthesis. I hope now this is clear, students, all of you. तो ये जो food बना है in a form of a carbohydrate, that is, it is obtained in a form of a simple sugar, जिसको हम glucose बोलते हैं. So this food obtained, okay, just a minute. The food that is obtained, yes, in form of simple sugar, that is glucose. Am I right? Now this is transported, students. Yes, this is transported. इसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा? या फिर ट्रांसलोकेशन? इट इज डन थ्रू फ्लोएम. जैसे जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम. This is again a tissue there. Got it, students? Now, remember, students, now this is transported through a phloem to different parts of plants. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? वो ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा क्या? नहीं.
वो होगा इन अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज. सो दिस ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड, is converted, I will say, to sucrose and then transported. उसके बाद में ट्रांसपोर्ट होगा. गॉट इट. सो ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर. और दूसरी चीज, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च. गॉट इट. तो स्टोर फॉर्म में किसमें, कौन से फॉर्म में रहेगा, स्टार्च. और ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले सुक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट होगा और बाद में ट्रांसपोर्ट होगा. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर. मेनी टाइम्स वी मेक मिस्टेक, हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है ये समझ में आ गया, आई होप स्टूडेंट्स. तो कौन से मेजर स्टेप्स हो गए फोटोसिंथेसिस के हमने पढ़े. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट by the chloroplast. Chloroplast जो sunlight की energy को absorb करेगा. Yes, chlorophyll जो कर रहा है, which is present in the chloroplast, that is the first step. Second step is conversion of light energy to chemical energy. Yes, sunlight को absorb करेगा, बाद में वो energy को, वो light energy को किस में convert करना है, chemical energy में. और बाद में क्या होता है, water का splitting होता है. Yes, into hydrogen ion और oxygen में. अभी hydrogen ion तो क्या हो गया, रिडक्शन होगा. सो द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग द हाइड्रोजन आयन. या, and once the carbohydrate is obtained, this carbohydrate, it is transported, students, in a form of sucrose, and it is stored in a form of starch. Yes, and the oxygen that is produced as a byproduct, it will be utilized by the plants for respiration, and the other remaining oxygen is given out by the plants in an atmosphere. I hope ये समझ में आ गया. So this is what is we call as a photosynthesis. Now, one more important point just I wanted to tell you. What happens, students? These steps जो हमने ये these three steps that we have seen, it is not necessary that this steps takes one after another. ये तीनों steps जरूरी नहीं है कि पहले absorption होगा फिर तुरंत कन्वर्शन होगा फिर तुरंत रिडक्शन होगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. वो कभी भी होता है. यस, इट विल टेक प्लेस एट एनी डिफरेंट टाइम्स, एट डिफरेंट टाइम्स. सभी एक साथ होके जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेजर्ट प्लांट ले लिया, जो प्लांट डेजर्ट में उगते हैं. डेजर्ट प्लांट्स का प्रॉब्लम क्या रहता है, डेजर्ट में हीट बहुत ज्यादा रहती है. यस, तो बिकॉज ऑफ दैट वहां पर ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. वाटर लॉस होने की चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना. सो डेजर्ट प्लांट क्या करता है, पहले उनके पास पानी की कमी रहती है और बहुत ज्यादा गर्मी से और ज्यादा चांसेस है कि प्लांट में से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर ले. तो जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट्स की लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो है ना, सुबह के टाइम पे क्लोज रहता है. क्यों? क्योंकि वो पोर्स यदि क्लोज रहेंगे तो पानी जो प्लांट के अंदर का है वो बाहर नहीं जाएगा. इट विल स्टॉप द ट्रांसपिरेशन. तो जब वो पानी बाहर नहीं जाएगा और पोर्स क्लोज है, तो पोर्स क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अंदर नहीं ले सकते, है ना. सो द कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दैट इज डिफ्यूजिंग अंदर बाहर जो होता है थ्रू द स्टोमेटा, दैट विल नॉट हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम. सुबह के टाइम पे वो स्टोमेटा बंद रहता है, इसीलिए डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स रात को जब स्टोमेटा ओपन होता है उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर ले लिया, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट तो कब होगा, वो तो सुबह ही होगा. जब सनलाइट आएगी तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा ना. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एट नाइट, फिर उसको कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में बना के रख देते हैं वो. यस, वो स्टोर रहता है और सुबह जब सनलाइट आएगी, यस, क्लोरोफिल को तो सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा का कुछ काम नहीं है ना. सो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेंगी, इट विल कन्वर्ट द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा और जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस रहेगा वो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करके बैठा है प्लांट में, उसको यूज करके उसको रिड्यूस करेगी एंड कार्बोहाइड्रेट बनाएगी.
That's why we say that these steps, always remember कि ये steps एक ही साथ में plants में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है. It can take place at different times. Got it, students? And why the stomata are closed in a desert plants during the morning? ये भी आपको आंसर समझ में आ गया शायद से कि why it is done that, isn't it? So this was about the photosynthesis. Yeah. So now what are the product of photosynthesis? One is glucose. Yeah. Then water, oxygen, and the three end products. These ये तीनों end product है, glucose, water और oxygen. Glucose that means carbohydrate. जो ग्लूकोज है वो एक सिंपल शुगर के फॉर्म में रहता है. ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर ना. अब वो प्लांट या तो इमीडिएटली कंज्यूम करेगा या फिर उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा और बाद में उसको एनर्जी ट्रांसफर करने में यूज करेगा या फिर उसको इंसोल्यूबल स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करके रखेगा और उसको स्टोर करेगा. गॉट इट? अब ये ग्लूकोज का यूज होता है फॉर सिंथेसाइजिंग फैट्स एज वेल एज प्रोटीन्स. The second end product, that is water. Water reutilized होगा photosynthesis में. जो water बन रहा है ना, we are taking 12 molecules of water and then 6 molecules of water are liberated again. वो water फिर से photosynthesis में reused होगा. एक important point यहाँ पर याद रखना, it is given like the 6 molecules of water that is obtained as an end product. They are not from the original 12 molecules, but they are reformed during the reaction. यानी what is the meaning of that? यानी जो 12 water molecules हमने देखा है, मैंने आपको रिएक्शन बताया था 6CO2 plus 12H2. am I right? उससे हम क्या बना रहे थे? C6H12O6, उसके बाद 6 water molecule और 6 oxygen. am I right? molecules of oxygen, it was 6, sorry, isn't it? तो ये जो 6 water molecule है, ये 12 में से 6 बने ऐसा नहीं है. ये 12 के 12 यूटिलाइज्ड हो गए थे. अब ये 6 फिर से ये रिएक्शन में बने जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा था. गॉट इट? सो दिस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल 12 मॉलिक्यूल्स बट दे आर रीफॉर्म्ड. फिर से बने ड्यूरिंग द रिएक्शन और ये वाले फिर से यूज होंगे दूसरी साइकिल पे जहां पर हमको 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे. क्लियर? Now the last end product or the product of photosynthesis was the oxygen. Oxygen, some of it is used by the plants for the respiration. उसको हम बोलते हैं photorespiration. और कुछ पार्ट जो रिक्वायर्ड नहीं है ऑक्सीजन का प्लांट्स को, वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमाटा. Got it? So this is the product of the photosynthesis. Now next part or the last part that we will discuss very fast मैं आपको समझा दूंगी. ये लीफ जो हम ले रहे हैं, यस, व्हाट आर द एडेप्टेशंस इन द लीफ? लीफ में क्या क्या एडेप्टेशंस किए जा सकते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस? क्योंकि लीफ ही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. लीफ से ही फोटोसिंथेसिस होता है. लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है ना. सो लीफ ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, इसके लिए उसमें क्या एडेप्टेशंस हो सकते हैं? तो पहला है लीफ लार्ज सरफेस एरिया. जो लीफ का सरफेस एरिया रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस रहेगा स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाएगा वो लीफ. यस, सो लार्ज सरफेस एरिया इज नीडेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. लेकिन कुछ प्लांट्स की लीव्स नैरोअर भी रहती है, ऐसी पतली भी रहती है ना. सभी प्लांट्स की लीफ ऐसी नहीं रहती है. कुछ प्लांट्स की लीव्स आप देखोगे पतली भी रहती है. यस, ये क्यों होती है? ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो जाए ना. जैसे डेजर्ट प्लांट रहे हैं जहां पर वाटर कम है, जहां पे वाटर लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो प्लांट्स की लीव्स थोड़ी सी नैरो रहेगी ताकि ट्रांसपीरेशन रेट कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके. फॉर एग्जाम्पल पाइन लीव्स, पाइन के झाड़ देखे हो आपने, उसकी लीव्स कितनी पतली पतली होती है ना. तो दिस इज फर्स्ट इज द सरफेस एरिया. सेकेंड इज द स्टोमेटा. अब स्टोमेटा ऐसे पोर्स है जहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है और लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है वहीं से. एम आई राइट? सो जितने ज्यादा स्टोमेटा रहेंगे उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आएगा. तो मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा,
more photosynthesis can take place, isn't it? So numerous stomata to allow the rapid exchange of gases. Third is cuticle. जो ऊपर का पार्ट मैंने बताया था लीफ का, that is called as a cuticle, है ना? And the upper epidermis, they are transparent and waterproof to allow the light to enter. वो जितने पतले रहेंगे उतनी ज्यादा लाइट वो एब्सॉर्ब करेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट ऊपर के पार्ट में ज्यादा रहेगा लीफ के, ताकि सनलाइट ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब कर सके. सपोज वो अंदर अंदर रहेगा तो वो अंदर के पार्ट तक सनलाइट जाने में टाइम लगेगा. वो ऊपर ऊपर ही रहेगा तो सनलाइट इजीली और जल्दी से क्लोरोप्लास्ट भी ले लेगा. गॉट इट. सो द लार्ज सरफेस एरिया, स्टोमेटा, क्यूटिकल, chloroplast, these are some of the adaptations by the leaf for the photosynthesis. Apart from that, इसके अलावा और दो है thin leaves. Leaves जितनी ज्यादा thin रहेगी, yes, so उससे क्या होगा, it reduces the distance between the cells, helping for rapid transport. एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, तो जितनी ज्यादा पतली रहेगी तो सेल्स भी पास पास रहेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी जल्दी होगा. And vein system, extensive vein systems, we know that in the leaf there are veins, है ना. ये तो हमको जो मेजर में veins दिखते हैं, but there are so many tiny in this way, these are the small veins है. Am I right? तो जितनी ज्यादा veins रहेंगी, it is extensive, yes, SIV. It helps for rapid transport again, है ना. वेन से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा फ्रॉम द टू एंड फो फ्रॉम द मेसोफिल्स. Also to obtain maximum light source, the leaf arrangement should be at right angle. यदि right angle में रहेगी ना leaf arrangement तो भी maximum light energy absorb कर सकती है. So these are the adaptations by the leaf students for maximum photosynthesis. I hope this all thing is very understood to all of you. ये सारी चीजें समझ में आ गई है. Please try to write it down what you are learning in the class. क्लास के बाद में जो पार्ट हमने पढ़ा है वो बुक में से रीड करो. Definitely I am giving you some extra things there. If you have any doubt, you can again ask me anytime. You can give the ask in the comment section also. And just download the app, the Earth Academy app, because in that app you will get the complete courses for all these things. All the videos are, all the topics are taken in an detail students. और इसके साथ साथ आपको और क्या मिलेगा यहाँ पे अर्थ एकेडमी ऐप में, आपको कोर्सेज में नोट्स भी मिलेंगे स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे. गॉट इट. So the tests are also taken. So I hope you all will download the Earth Academy app also very soon if you have not. Yeah. So thank you all for attending the class. See you soon in the next class with a new topic. Till then, all of you, bye bye. Take care. Keep learning. All the best for your studies. I'm providing you the link for the app. If you are interested, you can join the app. You can download the app through this link and take the benefit of the courses. Okay. Till then, all of you, bye bye. Take care. Have a good day. Bye.